welcome in my YouTube channel and another video that is very short video as per demand of the student. It is just revision video, not the conceptual video. Exam point of view, I am preparing another video to cover the two important questions on the topic called as field effect transistor. So next topic in syllabus that is called as field effect transistor. Our weightage roughly रहेगा इसका 6 marks and for that you have to cover the two questions. I know that it is a high time, you cannot listen knowledge and everything, you require only the what questions are there and what should we write for the question. That's why I am covering the FET topic that is called as field effect transistor. Under that first questions हमेशा रहेगा that is called as explain. Question 1, explain construction of FET. Explain construction of FET. Construction of FET. Construction of FET and working principle. Working principle. तो सबसे पहले FET का जब आप कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज बेटर दैट इफ यू ड्रॉ द two column. Construction point of view, your FET get classified into two part. One is called as N channel. Which channel? N channel FET, and another is known as P channel FET. N channel and P channel FET. So what is the meaning of N channel FET? By the way, BJT is a bipolar device. It carries two carriers. But in FET it is a unipolar device. So first important difference, BJT and FET, one is a bipolar and FET is a unipolar, means it consists only one carrier, either P or N. That's why N channel का मतलब रहेगा it always consists channel of N type semiconductor material. That's why it is called as N channel. Opposite side in P channel, it consists channel of P only. Channel of P only. So the first part, that is N channel, is made from N type of semiconductor material channel and P type of semiconductor material channel. In order to increase the input impedance, 2 ohmic contact of SiO2, that is silicon dioxide, is attached on either side of channel. Intention to increase the input resistance. That's why it acts as a channel, and then one terminal is taken away. That terminal is called as a drain, and another terminal is called as the source. One is a drain, another is a source. So this is the structure for N channel. Same here, 2 ohmic contact are attached on either end. 2 ohmic contact are attached on either end. One is taken as a drain, another terminal is known as the source. One is a drain, another is a source. So this is about N channel and P channel, but here one junction should be formulated. That's why in order to create the junction, that is opposite carrier, in N type there is a opposite carrier, matlab P type semiconductor material is diffused by both the end and both the P should act as a single one. That's why they are internally short circuited. And then one terminal is taken away. That terminal is called as gate. So तीसरा टर्मिनल आ जाएगा FET के अंदर. पहला हो गया ड्रेन, दूसरा हो गया सोर्स, तीसरा हो गया गेट. सेम हियर इन P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, P चैनल FET, दोनों साइड से N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज डोप्ड and both N should be act as a single one. That's why they are internally short circuited, and then one terminal is taken away. That terminal is called as the gate. So if you see, basically the FET act as 3 terminal 1 junction. That's why it is called as unipolar. And why it is called as field effect transistor? Because in BJT output current is controlled by input current. That's why it is known as current control device. But in FET output current is controlled by input voltage. That's why voltage is called as field. That's why this is called as field effect transistor. So अगर आप इसके सिंबल के बारे में बात करोगे तो सिंबल दोनों का सेम रहेगा. 3 टर्मिनल, one is known as a drain, another terminal remains source, and this terminal act as a gate. So this is a symbolic representation. Same here, this is a drain, this is the source, and this is the gate. तो दो सिंबल हो गए सिमिलर, बट दोनों में डिफरेंस लाने के लिए दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए. हाउ यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज पी चैनल और एन चैनल?
we mark the gate current. BJT में we mark the emitter current, here you mark the gate current. So PN मतलब current direction remain inward, gate current direction remain inward, and it is active device, that's why highlighted by the circle. This is a symbol for N channel, and here PN मतलब current comes outward, so if I mark the outward current, then this is a symbol for P channel FET. So this is the first job you have to do in exam. If there is a question explain construction of FET, you have to draw one N channel FET and you have to draw one P channel FET. So simple construction of FET. And why it is called as FET? Because output current is controlled by input voltage, that's why name is field effect transistor. Only one junction, that's why known as unipolar device. So that work you have to write here, and then we'll proceed ahead to understand the working principle of FET. Working principle of FET. Working principle of FET. Simple word में, as compared to BJT, it is very straightforward and simple. So draw once again one N channel FET. So if I take N channel FET, this is my N channel FET. This is my drain terminal. This is my source terminal. This is a source. दिस इज अ ड्रेन. और आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया था, क्या रहेगा, दो, ये अगर एन चैनल है तो अपोजिट साइड दो पी आर कनेक्टेड एंड बोथ पी एक्ट एज अ सिंगल पी, दैट्स व्हाई दे आर इंटरनली शॉर्ट सर्किटेड एंड वन टर्मिनल इज टेकन अवे, दैट टर्मिनल इज कॉल्ड एज द गेट. सो सिंपल कंस्ट्रक्शन. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल, मैंने पहले ही कहा कि टू ohmic कॉन्टैक्ट आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड. That's why initially this channel looks like a high resistive channel. So resistance you have to draw to explain the phenomena, and then you have to draw one characteristic. That characteristic is always output voltage, that is VDS, versus output current, that is called as ID. And another characteristic, if possible, you can draw, that is called as a transfer characteristic. This is ID versus VGS. What that I'll explain. So two characteristics you have to explain when there is a question. Explain construction and working principle of FET. So first job, suppose I apply the biasing to the FET. So first, if I connect one external battery such that positive towards drain and negative towards source, then that battery potential is called as VDS. क्या कहेंगे इस बैटरी पोटेंशियल को? VDS, because I am applying voltage between drain and source. जब भी आप इसको ड्रेन एंड सोर्स के बीच में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो एन चैनल के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो जब भी आप पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ अप्लाई करोगे और निगेटिव टर्मिनल यहाँ अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एक्सेलरेटिंग फ्रॉम सोर्स टर्मिनल टुवर्ड्स द ड्रेन टर्मिनल. तो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, मींस इंपॉर्टेंट चेंज टेक प्लेस, दैट first current, that is called as a drain current, is passing in opposite direction, that current is called as ID. लेकिन आप देख रहे हैं कि ये ड्रेन करंट जो है उसे बहुत सारा रेजिस्टिव पाथ कवर करना पड़ता है. दैट्स व्हाई इनिशियली देयर इज अ VI रिलेशनशिप बिटवीन ड्रेन करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, दैट इज VDS. बट वंस दिस ड्रेन करंट ओवरकम चैनल रेजिस्टेंस, देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तब मैंने इनपुट वोल्टेज कुछ भी नहीं अप्लाई किया है तो VGS आई कैन से 0. गेट एंड सोर्स के बीच में कुछ भी अप्लाई नहीं है तो मैंने कहा VGS इक्वल्स टू 0. अप टू दिस पॉइंट मेरा BJT ओमिक रीजन फॉलो कर रहा है, बिकॉज इट फॉलो द VI कैरेक्टरिस्टिक लीनियर. दैट्स व्हाई दिस ऑपरेटिंग रीजन इज कॉल्ड एज ओमिक रीजन. तो पहला रीजन रहेगा, BJT में क्या क्या रीजन थे, कट ऑफ, एक्टिव, सैचुरेशन. यहाँ पहली रीजन आएगी ओमिक, और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन. इस रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन. अभी मैंने गेट का कोई एप्लीकेशन नहीं किया है गेट करंट का, लेकिन अगर मैंने गेट करंट को अप्लाई किया, सपोज यहाँ पे अगर मैंने गेट वोल्टेज अप्लाई किया सच दैट नेगेटिव टुवर्ड्स गेट एंड पॉजिटिव टुवर्ड्स सोर्स, तो इस वोल्टेज को मैं कहूंगा VGS, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स. ये रिवर्स बायस वोल्टेज है, बिकॉज P कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड N कनेक्टेड टू द पॉजिटिव. तो ये रिवर्स बायस वोल्टेज की वजह से होगा क्या कि डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, बट डिप्लीशन रीजन अंदर इंक्रीज हो जाएगी इनसाइड द चैनल. और जब आपकी डिप्लीशन रीजन अंदर चैनल के अंदर जनरेट हो जाएगी तो चैनल की विड्थ कम हो जाएगी. चैनल की विड्थ अगर कम हो गई तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, मतलब आपका ड्रेन करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ड्रेन करंट कम हो जाएगा व्हेन VGS इक्वल्स टू सपोज इक्वल्स टू -1.
और मैं VGS बढ़ा दूंगा तो और डिप्लीशन रीजन आपकी इंक्रीज हो गया जाएगी, अंदर चैनल की विड्थ कम होगी, लेस करंट पासिंग फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, मतलब मेरा ड्रेन करंट और कम हो जाएगा फॉर VGS इक्वल्स टू -2। ऐसे करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि पिंच ऑफ वोल्टेज, मतलब दोनों P अंदर एक दूसरे को टच करेंगे, मतलब आपका चैनल विड्थ हो जाएगा 0। और जब आपका चैनल विड्थ ही 0 हो जाएगा तो कोई करंट पास नहीं होगा, इसका मतलब आपका ड्रेन करंट बनेगा 0 एंड दिस ऑपरेटिंग रीजन सिमिलर टू BJT हम कहेंगे कट ऑफ रीजन, एंड इन दिस रीजन FET एक्ट एज ओपन स्विच। तो सिंपल लाइक BJT, ये रहेगी कट ऑफ रीजन, ये रहेगी ओमिक रीजन और ये रहेगी सैचुरेशन रीजन। लेकिन आपको अगर BJT एज एन FET एज एन एम्पलीफायर चाहिए तो you should bias your FET in saturation region, then automatically you will get the amplification action. So that is the important difference between working principle of FET and working principle of BJT, and this is called as output curve, output characteristic of FET, output characteristic of FET. And now what is the meaning of input characteristic? Tell me, when VGS is 0, no VGS, that's why my FET deliver me maximum current, that current I say IDSS। IDSS का मतलब होता है ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट मिलेगा। लेकिन जैसे मैं VGS निगेटिव अप्लाई करूंगा, इसलिए इस ग्राफ इस साइड ड्रॉ किया है, जैसे जैसे VGS कम निगेटिवली अप्लाई होता जाएगा, मेरा ड्रेन करंट कम होता जाएगा, एंड देन एट पर्टिकुलर पॉइंट को मेरा ड्रेन करंट कितना हो जाएगा 0। सो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये ग्राफ दिखा रहा है कि व्हाट इज द VGS? VGS मेरा इनपुट वोल्टेज है। मेरा इनपुट वोल्टेज क्या कंट्रोल कर रहा है? आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रहा है। इनपुट वोल्टेज 0 है तो आउटपुट करंट मैक्स है। इनपुट करंट वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा ड्रेन करंट क्या हो जाएगा 0। एंड दैट्स व्हाई BJT इज कॉल्ड एज field effect transistor, because output current is controlled by input voltage, so that you have to explain properly in question number 1, what is the construction and working principle of FET. Now we'll go for second question, that is called as explain FET as an amplifier. BJT में हमने देखा था कि BJT में हमने जो डायग्राम ड्रॉ की थी सेम टू सेम डायग्राम आपको FET में ड्रॉ करना है, बिकॉज बेसिकली आई एम टेकिंग इट इज अ शॉर्ट टाइम रिवीजन, सो इट इज नॉट अ कंसेप्ट वीडियो, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट यू हैव टू राइट। सो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन FET एज एन एम्पलीफायर, BJT का जो डायग्राम हमने देखा है वही सेम डायग्राम आपको लेना है और उसी डायग्राम को सिर्फ FET से रिप्लेस करना है। मतलब अगर यहाँ सर्किट डायग्राम ड्रॉ एक बार BJT हो गया तो FET भी आराम से आप कर लेंगे। तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले देखो, यहाँ VCC था तो यहाँ VDD वर्ड आएगा, यहाँ रहेगा आपका R1 सेम, यहाँ रहेगा R2 सेम, BJT के और FET की डायग्राम सेम। सिर्फ आपको क्या करना है कि FET ड्रॉ करना है। RC के जगह यहाँ हो जाएगा RD और यहाँ हो जाएगा आपका RS, और यहाँ एक इनपुट कैपेसिटर कनेक्ट करना है और यहाँ लगा देना है आपको इनपुट, यहाँ लगा देना है इनपुट, और यहाँ एक कैपेसिटर लगाना है और यहाँ से लेना है आपको आउटपुट। सो ये हो गया इनपुट और आउटपुट के पास एक पॉसिबल एक कैपेसिटर ड्रॉ करो एज अ CS। तो ये रहेगा, और म्यू इज द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ FET दैट यू कैन हाईलाइट। सो दिस इज अ सो सिंपल सर्किट डायग्राम। BJT के साथ कंपेयर करेंगे तो VCC इज रिप्लेस्ड बाय VDD, R1 R2 रिमेन सेम, कैपेसिटर ऑल रिमेन सेम, ओनली डिफरेंस RC के जगह RD और RS की जगह RS। और उसके साथ साथ आपको एक आउटपुट कर्व ड्रॉ करके, ये आपको पता है आउटपुट कर्व रहता है ID और ये रहता है आपका VDS, और यहाँ ग्राफ्स लाइक दिस है, सेम कैरेक्टरिस्टिक यू हैव टू एक्सप्लेन एंड रफली यू हैव टू शो दैट यू आर बाइसिंग योर FET इन, ये आप इनपुट लगा रहे हैं और आपको शो करो कि लार्ज अमाउंट ऑफ आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, या ये पॉसिबल नहीं रहेगा तो रफली यू कैन शो दैट व्हेन यू अप्लाई वेरी स्मॉल लेवल ऑफ इनपुट हियर यू विल गेट इन लार्ज वर्जन ऑफ आउटपुट यहाँ पे। सो दैट इज द एम्प्लीफिकेशन एक्शन एंड दैट इज पॉसिबल टू FET। तो इतना भी 4 या 6 मार्क्स के लिए आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट टू एक्सप्लेन FET एज एन एम्पलीफायर। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देयर मे बी चांस दैट देयर इज अ कंपैरिजन between FET and BJT। तो 2 कॉलम आपको करना है, पहले कॉलम में लिखना है BJT, ये बाहर ही करना है, और दूसरे कॉलम में लिखना है FET।
चार भी कंपैरिजन आपने याद कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। तो पहला कंपैरिजन मैं लिखने जा रहा हूं, टेल मी व्हाट इज अ बीजेटी। इट इज बाइपोलर डिवाइस, इट इज अ बाइपोलर डिवाइस। यहां क्या लिखोगे, इट इज यूनिपोलर डिवाइस, बाइपोलर डिवाइस तो दूसरे साइड होगा इट इज यूनिपोलर डिवाइस। ये रहेगा पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन आपका क्या आएगा, इट इज करंट कंट्रोल, करंट कंट्रोल, करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, बिकॉज आउटपुट करंट इज कंट्रोल बाय इनपुट करंट। तो ये रहेगा वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये दूसरा कंपैरिजन रहेगा आपका। तीसरा कंपैरिजन लेस टेम्परेचर स्टेबिलिटी, लेस टेम्परेचर स्टेबिलिटी, लेस टेम्परेचर स्टेबिलिटी यहां रहेगी। बेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, बेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी, बेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी इफ पॉसिबल। इसमें कौन कौन से कनेक्शन हो जाते हैं, इसमें लिख सकते हैं आप कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। ये तीन कॉन्फ़िगरेशन इसमें रहेंगे। यहाँ रहेंगे कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, टर्मिनल लिखना है सिर्फ, एंड कॉमन गेट। एंड लास्ट में आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन जाएगा लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। अपोजिट साइड रहेगा लो, सेम, दोनों का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम है, लो एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और एक चीज यहां अगर चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं कि बीजेटी का सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं एक कॉलम में, एक कॉलम में यू कैन ड्रॉ द बीजेटी सिंबल लाइक दिस, बीजेटी। ये है आपका कलेक्टर, इमीटर, बेस। और यहां अगर चाहिए तो आप एन चैनल एपीडी का भी एक सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। सो सिंपल यू कैन डू द कंपैरिजन। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, तो तीन क्वेश्चन एपीडी में करना है, कंपैरिजन बिटवीन बीजेटी एंड एपीडी, बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, एपीडी एज एन एम्पलीफायर एंड एपीडी का वर्किंग प्रिंसिपल। I am just giving the short last minute revision point of view this, so I am not given so much theoretical conceptual meaning, but I have tried to explain the last minute revision of BJT and APT. Thank you.